This is the fourth problem based on verifying PDF or not. So they have given us f of x equals to x square by 18. I took different problems with different functions. Somewhere it is exponential function, somewhere it is trigonometric function. Here I have here it is x square by 18. So x lies between minus 3 to 3 and equal to 0 otherwise. So whenever they'll give you function f of x, so for this interval minus 3 to 3, it is x square by 18, and for another values its value is equals to 0. So the function is given by them. Okay, so I have to prove this as PDF or not. So its solution is as f of x equals to x square by 18. So is quadratic in quadratic form, yes or no? This is x raised to 2, or this is square function. So it is always positive, yes or no? If I consider value of x equals to minus 2, so minus 2 bracket square gives me 4, right? So for any value of x lies between minus 3 to 3, I'll get that f of x is always greater than or equal to 0, right? So the function is greater than or equal to 0 for every x belongs to minus 3 to plus 3. So the first condition is satisfied, right? Now to verify the second condition. Now the second condition is we have to show integration of this function equal to 1. So let us consider LHS. So LHS, in LHS what we have? Integration lower limit to upper limit minus 3 to 3 f of x, which is x square by 18 in this problem, into dx. Now this 1 by 18 is nothing but constant term. So I took it as outside the bracket. So 1 upon 18. And what is integration of x square? Integration of x square is x cube by 3. Here it is upper limit, here it will be lower limit. So again this 3 is constant. So consider here. So I'll get 1 upon 18 multiplied by 3. Now put the values. Upper limit 3 square minus lower limit is minus 3. Upper limit is 3 cube minus lower limit is minus of 3 bracket cube. So it will be 1 upon 18 into 3 into 3 cube is 27 and minus 3 cube is minus 27. So minus minus becomes plus. So 27 plus 27 gives me 54, and 18 multiplied by 3 is nothing but 54. So its answer is 1. So both conditions are satisfied. Therefore it is a PDF. ये जो प्रॉब्लम है ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 18 है और मुझे बताना है कि ये फंक्शन PDF है या नहीं. उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? PDF होगा. अब मैंने क्या किया? मुझे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो मेरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 18, राइट. ये कौन सा है फिर? x टू द पावर 2 है. सो कोई भी नेगेटिव नंबर लिया मैंने तो उसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट. देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन दिस माइनस 3 to 3, ये माइनस 3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू होगा तो ये फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा है. अभी मुझे सेकेंड कंडीशन प्रूव करना है. उसके लिए मैंने फंक्शन लिया और ये प्रोसीजर फॉलो किया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला और उसका फाइनली आंसर 1 आ गया. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इसीलिए मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन PDF हो गया. I think, I hope all of you understood this. If not, you can ask me your questions on WhatsApp.